ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रियंका चंद्रा और पल्लव गुप्ता, आप दोनों का लेगा मॉक। ठीक है, आप नोटपैड में लिखते जाइए क्या क्या चीज आ रहा है, क्या क्या चीज आपको आ रहा है, आपको पता चलेगा। लिखते जाइए, जो आ रहा है वो लिखिए, जो नहीं आ रहा है वो भी लिखते जाइए। तो एंड ऑफ द सेशन ग्रुप में भी अपडेट करेगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें आपको ज्यादा माथा लगाना है, जो आ रहा है उसमें आपको माथा नहीं लगाना है। फिर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, ठीक उसमें आपको है। ज्यादा यस दिमाग नहीं लगाना है फिर, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, ओके। सर तो वो मेरा आप लिखते जाइए रिवीजन नहीं फटाफट। हुआ है। हाँ, सर एक्चुअली मैं 2-3 दिन बाहर थी ना, तो अभी कोई रिवीजन दिक्कत नहीं नहीं, हुआ, बट कोई ठीक है, दिक्कत कोई नहीं, नहीं। आप ले लो। दिल ले लेता है, आप ही लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, जिंदगी में ना हमेशा ना ऐसे ही होता है काम। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए सब चीज। ठीक है, ओके। एक मिनट, आप लोगों को बता देता है, हम पहला 15 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था, बिना प्रिपेयर किए हुए नहीं जाते थे। और हमको लगा ऐसे ही ले लेगा, ऐसा चेहरा देख के ले लेगा, तो ये लोग ले लेते हैं, वैसे ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया था, देते रहते। फिर ऐसा बात आई बाद में, तो या देख देख के याद है था। हमको तो ऐसा भी हो गया था, उसका चेहरा देख के हम बता देते थे कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, प्रियंका चंद्र। Good afternoon, sir. I would like to thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. My name is Priyanka Chandra. I live in Delhi, and I have recently qualified Chartered Accountant exam in November 2022, and I have cleared CA final and CA inter in first attempt. And I did my articleship from mediocre size firm where I got exposure in statutory audit, internal audit, and little bit in taxation. But I have had major experience in stat audit. And I did my graduation from Sri Aurobindo College of Delhi University, and I did my schooling from CBSE board. And please let me know anything you want to know apart from it. Thank you. First of all, a very good morning, sir, and thank you so much for this opportunity. My name is Pallab Gupta, and I recently qualified Chartered Accountant in November 22 exam. I'm basically from Kapurthala, Punjab. I did my graduation from Delhi University. Thereafter, I did my articleship from Manoj Kumar Mittal and Company, which is known for their stat and taxation work. I'm fortunate enough during my articleship, I worked in every field, but majorly I did my articleship in stat audit only. During stat audit, I'm responsible for audit of revenues, inventory valuation and stock valuations also. Apart from this, I have also done a tax audit, audit, GST filing, and annual returns. And I will be very fortunate if I'm able to join this esteemed organization. Thank you. था दोनों का आंसर, पर आप लोगों ने जो काम बताया ना वो नहीं बता रहा था। So I've done walk through, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट एरियाज, कारो शेड्यूल 3, वो चीज आप लोग मिस कर रहा था, तो वो चीज आपको लिखना है। दूसरा चीज मीडियोकर नहीं बोलना है, मिड साइज। मीडियोकर अच्छा नहीं लगता है, मिड साइज। तो ये दो चीज गलती हो रहा था। ठीक है, याद हो गया ना आप लोग को, लिखते जाइएगा ये चीज कि आप लोग जो स्टैट ऑडिट में काम क्या किया है ना, एरियाज, वो एरियाज भी कवर करना है स्टैट ऑडिट में। दूसरा चीज, आई वांटेड टू जॉइन योर फर्म because I was deeply interested in getting into Big Four, and stat audit is the dream profile to get into. ये दो चीज I wanted to get into because I get a deep knowledge about the business professionals. ये दो चीज आप लोग दोनों जन ने कवर नहीं किया। इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर आप लोगों का इंप्रेशन ज्यादा अच्छा क्रिएट होता है। तो बिग फोर क्यों ज्वाइन करना है, ये प्रोफाइल के कारण ज्वाइन करना है। बिग फोर ड्रीम कंपनी है। और दूसरा, एरियाज में आपको एरियाज बताना है, स्टेट ऑडिट में आपने क्या किया। तो आपने ज्यादा पर्सनल डिटेल्स आप ज्यादा बता रहे थे दोनों जन, तो वो चीज आप दोनों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट। व्हाट इज वॉक थ्रू, प्रियंका चंद्र? Walkthrough is a process to understand the business entity, its environment, and it helps to identify the risk of material misstatement and decide the nature, timing, and extent. And it helps to decide the substantive procedure based on the control testing. And then in the last step of work through, we do the reporting and the conclusion. So that's it. Okay, Palla Gupta, if I want to tell you that you need to walk through, do a walkthrough of a purchases, what are the steps that you will perform? आप लोग आंसर भी सुनिएगा एक दूसरे का, that is also very important. What are the steps that you will perform while doing a walkthrough of a purchases? First of all, we have to determine the material requirement.
Then the material requisition will be sent to the purchase department, and then they will be issuing the quotations to the client, so that they can file the tenders also. And then the selection of the vendors, proper due diligence will be done by the purchase department, that so that the proper vendor can be selected. Thereafter, the purchase department will issue a purchase order. Then the goods are received. Then proper verification will be done whether the goods received are in the line with the purchase order or not, and then the payment will be made. This could be the proper walkthrough for the purchase of any material. Priyanka Chandra, what is audit risk? Yes, audit risk is a risk that auditor might give a inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. And there is a three type of audit risk: control risk, inherent risk, and deduction risk. Sorry. What is management override of control? प्रियंका चंद्रा, वन सेकेंड. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स. आप लोग लिखते जाइएगा, जो आंसर नहीं पता है आप लोग को. जो चीज आता है उसका ठीक है, जो चीज नहीं आता पता चल जाएगा एंड ऑफ द डे कितना आप लोग कितना पानी में है और कितना पानी से ऊपर चल रहा है. ठीक है. ओके, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स. Yes, management override control is a major audit risk. In the management override control, it's like management. आप लोग अगर Management 50% override. से ऊपर जवाब दे रहे हैं तो गुड टू गो. आप लोग इंटर कैंपस गुड टू गो, यू आर वेरी मच इन द ट्रैक, हो जाएगा एकदम. ठीक है. तो 50 से नीचे है तो थोड़ा एफर्ट डालना है, ये भी आपको मेजरमेंट आ जाएगा. ठीक है. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, बोलिए प्रियंका चंद्र. हाँ. Yes, management override control is a major audit risk, and in the management override control, management override its control by doing by passing the journal entry, fake journal entries, or unusual transactions, and use uh, I'm sorry, sir, I'm not able to frame this answer, but I know the answer. Don't say I this will properly. हाँ, you can think little time. If you need time, हमेशा इंटरव्यू में थोड़ा टाइम चाहिए तो थोड़ा सोच लो फिर बोलना. ये हाथ वाथ मत बोलना, थोड़ा सोच लो. नॉट याद हो जाता है तो होता है टेंशन में. पर तो अगर तुमको आंसर पता है थोड़ा टाइम लेना. नहीं याद आ रहा फिर तुम बोलना सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. ठीक है. बट आई नो दिस आंसर व्हिच वाज गुड. गुड. ओके. यू वांट टू ट्राई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, पलक गुप्ता? Yes, sir. The management overall control means that the management has discretionary power over the controls. Like they can make the fictitious and manipulate the accounts also. So we need to check that there is not any manipulation in the entries. We can check this by checking the journal entries also. Like if there are any entries which is involvement in the estimations, management estimations. So this can be so the management can over control the entries also. Apart from this, we have to check the year-end entries and the adjustment entries, which is made by the management. So we can check this also. And if there is any transaction which is not in the ordinary course of the business, so we can ask the management then what is the reason for the entry. So this can be some examples for the management override controls, and the way we can check that. ठीक है. आप अपना हाथ हिला रहे हो, दिस गुड. ओके. आप थोड़ा ना लैपटॉप को नीचे रखिएगा. पलक, आप लैपटॉप से आया कि मोबाइल से आया, आई डोंट नो, पर आप थोड़ा नीचे रहिएगा. ठीक है. क्योंकि बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं विच इज वेरी गुड, तो वो दिखना भी चाहिए ना आपका, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है. तो थोड़ा नीचे रखिएगा लैपटॉप को. थोड़ा लैपटॉप को नीचे और होगा आपका, थोड़ा और नीचे आएगा आपका. हाँ. क्योंकि जैसे आई लाइक कि आप थोड़ा जितना ज्यादा हैंड मूवमेंट करेगा आपको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा, सामने वाला को भी लगेगा अच्छा. तो जैसे यू आर डूइंग विच इज गुड, वेरी गुड. ओके. तो आपने थोड़ा बहुत हिलाया, बहुत अच्छा था. ठीक है. तो हैंड मूवमेंट्स आर वेरी गुड, पर एक चीज है दूसरा को हाथ दिखना चाहिए, आपका फिंगर दिखने से नहीं होगा. Yes. यू गेटिंग माय पॉइंट? वो चीज है. ठीक है. ठीक है. वेरी गुड. हमेशा जब प्लेसमेंट होता है ना बैठने का, तो हम भी ऐसे करके नहीं बैठे थे, ऐसे बैठे थे. दिस नॉट द राइट पोस्चर. ऐसे करके बैठना है. और हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा आपको आगे करना है ये चीज को. तो आपका पूरा जो आपने ड्रेसअप करके आए, इट शुड लुक एक्चुअली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि उस दिन कोट पहन के तो जाना ही है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वेरी गुड. द क्वेश्चन इज लाइक what were the procedures you will do while performing the fixed asset verification? Priyanka Chandra.
Yes. So first we will आप do कुछ कुछ the आंसर्स भी अगर नोट कर सकते हैं ना तो नोट नहीं करते गए, जो दो चार पॉइंट्स होता है ना तो काम आएगा, क्लिक कर देगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, हाँ बोलिए। first we will do the physical verification of the inventory. If there is any discrepancy in the physical verification, we will do the CARO reporting as per CARO 2022. And for the title deed of 22 we will check that 22 20. अच्छा सॉरी सर 2020 ना, 20 2020 CARO और 20. 10% से ज्यादा वेरिएंस होने से ही आपको कारों में करेगा। 10% से ज्यादा होने से तो भी बताना था। ओके। Okay. And sir, we will check the title deed of the movable property is owned by the company or not. If title deed is not owned by the company, we will do the CARO reporting as per the given format in CARO 2020. And then we will obtain the fixed asset register and compare with the journal ledger, trial balance, and fixed asset schedules. And then we will perform the test of detail for the addition in the fixed asset register by taking the samples and compare with the invoice. We will check the um, uh, date of capitalization is correct or not, and we will recalculate the depreciation to check the whether the depreciation charge in the P&L is correct or not. And in the last we will check the presentation and disclosure as per the NDS 16 or AS 16. अभी तक आपको सुनील इतना कंफर्ट है, कहाँ पर मैं आ रहा था, कितना जगह नहीं आ रहा था, जहां तक पूछे। सर मेनली तो ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल वाले में प्रॉब्लम आ रहा था, और एक वो ओके, यू आर एबल टू गिव सम कॉन्फिडेंस, राइट। वो बोलना अलग चीज यस है पर आ रहा था, राइट। बोलना अलग चीज बाकी होता है ऑडिट पर आ रहा था, हाँ, तो दैट इज गुड। ठीक है, तो दिस इज गुड ना, तो यू नो अबाउट योर, अब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा लिखते जाइएगा, विच इज गुड। ओके, व्हाट आर द योर मेजर क्लाइंट ऑब्जर्वेशंस पलक? Yes, sir. So, as during my articleship, I was doing थोड़ा सा नीचे I आइए, did थोड़ा सा आपका फिर से वो है, हाँ, थोड़ा सा कोशिश कर, हाँ। one second, 1 second, sir. Just give me कोई 1 दिक्कत नहीं है। second. Now, हाँ, वेरी गुड, हाँ। yes, sir. Sir, during my articleship, I have responsible for audit of revenue of an unlisted company, which is for manufacturing. So the performance obligation was for designing and then manufacturing of furniture and installation and then after sales services. So they were taking advances from the clients, which was for designing purpose also and for manufacturing purpose also. So, as per the GST provisions, advances for services we need to pay the GST, but advances for we need not to pay GST on advances. So our client was taking advance for both the services and for goods. So they are not paying the GST on the services part also. So this was my major observation, that the advances which was taken for the services or design purposes, they have to pay the GST on this also. आप एक ऑब्जर्वेशन बता के चुप मत हो, कम से कम 3 या 4 ऑब्जर्वेशन बताओ। सेकेंड थिंग, आपका ये स्टेट ऑडिट डोमेन का है तो जीएसटी वाला ऑब्जर्वेशन इतना मजा नहीं आएगा किसी को। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन का था ना वो पढ़ा है ना आपने, वो बताओ। 3 से 4 ऑब्जर्वेशन आपको Okay, होना चाहिए, और जीएसटी वाला बताने से वो मजा नहीं आएगा। okay, sir. Sir, apart from this, I have the one major observation also, which is for warranty claims. Like my client is for providing services to the motor company, for which they provide the claims. I'm so sorry, sir, I got confused. Can I नो प्रॉब्लम, repeat? श्योर श्योर। नेट का इशू है, ठीक है, आप बोलिए तब तक वो आती है। क्लाइंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या था आपका? आ गई Yes वो, sir. आ गई वो। नेट का इशू है उनका, पीजी से ऑपरेट करते इनका नेट का रहता है थोड़ा। Sorry, कोई दिक्कत नहीं है, I'm अलग। audible, sir. यू आर ऑडिबल, तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा बस। Yes, sir. इंटरनेट आप सही करिए, आपको बहुत ही एम्बेरस कर सकता है। इंटरनेट इज समथिंग विच इज वेरी प्रॉब्लम, आपका पहले भी हम देखा है।
Yes, sir. Yes. दिस इज समथिंग दैट Sorry. यू हैव टू, हाँ, बिकॉज आपको बहुत हुआ पर मैं, क्योंकि आपका नॉलेज अच्छा है, योर कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी गुड। इंटरनेट थोड़ा सा आपको Very. करना। Yes, sir. So, sir, there was a client which provide वीडियो ऑन नहीं होगा volunteer आपका? services. वीडियो वीडियो Sir, on a video. वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है एक्चुअली। आप लोग को दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं, वीडियो ऑन No, नहीं है sir. आपका। एक बार सर मैं rejoin कर लेती हूँ। हाँ, आप थोड़ा रीज्वाइन issue हो करिए, रहा है। और नेट का थोड़ा आप रखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दुख दे सकता है बाद में जाके, बिकॉज वहां पर नॉलेज आपका अच्छा है। ठीक है, आप बोलिए क्लाइंट ऑब्जर्वेशन, प्रियंका चंद्रा। Yes, sir. Yes, sir. I had a client that manufactured the tiles, marble, and bathware products. So, in the manufacturing process, P2P is the major risk. So, I had found that in the P2P process, major risk that lots of the purchase were made from related party without proper quotation and even proper authorization by the vertical head, and even the payment was done without the three-way matching. So this is the first observation, and the second, in the case of the client used to uh, uh, sorry sir, give me 1 second. श्योर। Yes, in case of one client, so one client hadn't comply with the CSR related provisions. So when we asked the management, so they told that they was thinking that CSR should be charged on the profit after tax. So we told that CSR should be charged before tax. So this is the second observation, and the third observation, in the newly incorporated company, they actually sold their product to their related party at the higher price, and even they hadn't disclosed that matter in the notes to the account. So this is the third observation. And the fourth observation, company used to hire their employee on a contractual basis, and the contractual person used to charge a commission over the salary of the contractual employees. So company hadn't deposited the PF or ESI on the contractual staff. When we raised that matter to the management, so they told that a responsibility to deposit PF or ESI comes on the contractual person, but as per the PF or ESI Act, PF or ESI should be deposited by the principal employer. So we raised that point matter, and when we started calculating the amount of the PF or ESI, so amount across the overall mortality level, because company hadn't deposited the PF or SI for last few years. So that amount crossed the overall mortality level. So we communicate the management to rectify that misstatement. What is So overall this is for materiality and performance materiality? overall mortality. Yes, overall mortality is based on the auditor's professional judgment as to the maximum amount of misstatement. If not corrected in the financial statement, it will not affect the decision making of the user of the financial statement. If misstatement is higher than the overall mortality, it implies that the financial statement are materially misstated. And performance mortality is lower than the overall mortality. It is generally 50 to 75% of the overall mortality, and we calculate the performance mortality to be on a safer side. So we don't need to weight the overall mortality level to breach in order to communicate, in order to inform the management about the misstatement, uncorrected misstatement. And we calculate mortality due to time and cost concentrate. पहले कि आप जब पहले आए थे हमारे पास, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, असल मुझसे इंग्लिश ही नहीं निकलता था। आई वाज सो वरीड। अब आप इतना अच्छा से बोल रहे, आई लाइक इट, आई रियली फील गुड अबाउट कि हाँ ठीक है। आंसर अच्छा से बोल रहे हो, गुड गुड। ओके, पलक आप बताइए क्लाइंट ऑब्जर्वेशंस। Yes, sir. Sir, I will start from the second observation. Okay, sir. श्योर श्योर Yes, श्योर। sir. Yes, sir. Sir, there was our client which provides services to the motor company that they, if the client perform
client perform the services to to their customer and issue invoice which is zero invoice, and they claim the warranty from the motor company. So but there were no follow up on the warranty claims of more than 3 years, and the time was taken for more than 3 years, and there were no response from the motor company. So I asked the management why they are not follow up the company, why not the motor company. So we have to write off the claims which are not being followed up and which are more than 3 years. So we have write off all the revenues also. Other than that, there was I have done an audit of manufacturing company in which I am responsible for the inventory valuation. So there was a discrepancy related to the valuation of inventories. Like mostly 90% of the industry value their inventory as cost or NRV, whichever is lower. So the cost we can get from the cost sheet from the company, and the NRV which have to estimate from the sales register, which would be the subsequent sales registers. But in that case, we do not have the proper sales value. So we have to take the recent sales value, but the company is not taking that value. So I asked to my principal that they are not taking the right value for matching the NRV. So we changed the values and we taken that to the latest sales value also. ठीक है, ये अच्छा है। आप ना आपको ये सब काम आएगा, आपका बॉडी मूवमेंट्स आप कर रहे हैं, विच इज गुड। ठीक है, हैंड मूवमेंट्स। आप 2-3 चीज इंप्रूव करिए कि थोड़ा जब इंग्लिश आप बोल रहे हैं ना तो फ्लुएंसी निकल रहा है, बट इतना ज्यादा कम्युनिकेट में और इम्प्रूव कर सकता है, मतलब हो रहा है ना थोड़ा सा। तो ये चीज शायद आपको हैंड मूवमेंट डिस्ट्रैक्ट कर, आई डोंट नो, बट मे बी आपका हैंड मूवमेंट भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको इंग्लिश बोलने के टाइम में। तो वो नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा हैंड मूवमेंट मत करिए कि आपका इंग्लिश डिस्ट्रैक्ट हो जाए सामने, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। देखिए क्या होता है ना, व्हेन यू गिव टू अ कैंपस इंटरव्यू और ऑफ कैंपस कहीं पर भी आप इंटरव्यू देते हैं, स्पेशली कैंपस इंटरव्यू, तो आंसर आने के बाद भी ना मेरे पास बहुत स्टूडेंटों का आता है कि सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते इन द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट, यू गेट कंप्लीटली मेस्ड अप एंड इट इज। मैंने अपना सीनियर को देखा ये होते हुए समझ रहे हैं ना। तो मेरे साथ नहीं हुआ था कि हम बहुत साथ दे चुका था। So just in the right moment in the campus, you know the answer, you know everything, but you're messed up totally. And it happens in the big stages, I'm telling you. अगर आप क्रिकेट देखते हैं, कुछ भी देखता है, बड़ा बड़ा मैचेस में आउट हो जाता है प्लेयर। क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रेस वो है। तो स्ट्रेस पहले से अगर वो ले लेगा ना तो वो बहुत हद तक कम हो जाता है मेजर इवेंट में। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर सबको मोटा मोटी पता होने के बाद भी फ्रेम नहीं कर पाता सेंटेंसेस, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं रहता है वो चीज का। कभी टेंशन, अभी भी आप जब बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं टेंशन है, राइट? देयर इज सम टेंशन। तो वो टेंशन आपको बहुत हद तक कम हो जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू जो होता है ना, वो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है। And some interviews are such that they might ask you a lot of cross questions also, तो वो भी एक है, तो वो भी एक टेंशन आपको ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, समझे? तो वो भी एक चीज है। ठीक है। Why do we calculate this performance materiality, Palak? So performance materiality is basically a level which is lower to the level of overall performance materiality. So the auditor does not wait for the breach of overall materiality. Once the performance materiality is breaches, the auditor will start communicating with the management for the reasons. So to keep it at the safer side, the auditor maintain a performance materiality level. Suppose if the overall materiality level is 100 crores according to the turnover, then 1 or 5% around the of the turnover will be the overall performance materiality. So majorly the 50 to 75% of the overall materiality will be taken as a performance materiality. So if once the performance materiality breach, the auditor will communicate to the management for the reasons and to correct the material misstatements. Saying that what are the external indicators of impairment which can impact an organization? Some of the factors which external factor which can indicate the impairment could be legal prohibitions and the entry of the strong competitor in the market, and also there is any technological major changes in technology. This could be the major external indicators of impairment. An internal indicator?
internal indicators could be like there is operational losses, continuous operational losses in the businesses, discontinued of any branch or branch and subsidiary, and there is a major damage to the asset. This could be the internal. How do you start an audit, Priyanka Chandra? How do you start an audit? Yes, sir. Audit done in a 3 phases: planning, execution, and completion. Before the planning, we have to comply with the SA 210 precondition of the audit. And after that, the planning. In the planning stage, we understand the entity, its environment, and identify the risk of material misstatement and decide the nature, timing, and extent and audit procedure that we will going to apply. And in the execution phase, we do this substantive audit procedure and apply on the financial item and the balance sheet item. And in the last I completion asked stage, you, how would you start an audit? Listen to the question nicely. How do you start an audit? Only starting part you need to tell, no? Okay. What are the procedures in the starting an audit? Like Repeat planning once. is only being Yeah. right. What? Yes. What will be the procedures in that? Repeat once. I didn't get, sir, what you want How to, do you I mean, start an ask. audit? How do you start an audit? Planning ही हो गया उसका मतलब. Assume करिए planning ही है. हाँ, क्या क्या चीज होगा उसमें बताइए. Okay, for the planning, understand the entity business process, and understand the control environment of the entity, and then we identify the risk of material misstatement. We will decide the nature, timing, and extent based on the control, and then we will decide the substantive audit procedures, which procedure we are going to apply in the audit. Anything That's else it. could be added, Palak, in audit planning? So identify the risk which can be threat to the business processes, and the control implemented by the management to mitigate those risks. Walkthrough of the processes, all the Analytical procedures. analytical वो नहीं Yes, बताया. analytical. एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है. आप पहले बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लेता है, वो लेता है, फिर फाइनेंशियल्स लेता है. व्हेन यू गो टू एन ऑडिट, जब आप स्टार्ट करता है ऑडिट, तो आप पहले क्लाइंट से फाइनेंशियल्स मांगता है. फाइनेंशियल्स वो देता है, फाइनेंशियल्स में एपी करता है. आप लोग एपी करके सिग्निफिकेंट अकाउंट्स निकालता है एंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जानने का कोशिश करेगा. एपी करेगा, एपी करके वेरिएंस निकालेगा. वेरिएंस निकलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें वेरिएंस ज्यादा है. फॉर एग्जांपल सेल्स में वेरिएंस ज्यादा है, परचेज में वेरिएंस ज्यादा है. तो वेरिएंस ज्यादा है तो वो मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट हो गया. जैसे हमको पता चल गया मेरे को परचेज में ज्यादा वेरिएंसेस दिख रहा है, तो आई विल आस्क द मैनेजमेंट व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएंसेस. तो वेरिएंसेस का रीजन लिखेगा, फिर हम लोग उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट अकाउंट पता चल गया, फिर हम लोग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पता चल गया कि इसमें हमको ये नेचर, ये इतना टाइम लगेगा और इसमें इतना एक्सटेंट तक वाउचिंग वेरिफिकेशन वगैरह जो भी एरियाज है वो हमको करना पड़ेगा. ये कौन करेगा, मैन पावर कौन लगेगा, कितना दिन में ऑडिट कंप्लीट होगा. तो एपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑडिट प्लानिंग. फिर रिस्क आता है, फिर बिजनेस रिस्क आता है, तो बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क वगैरह, फिर कंट्रोल टेस्टिंग, वो बात का बात है. ठीक है. फ्रॉड असेसमेंट भी होता है कि आप एक मैनेजमेंट से वो भी लेता है फ्रॉड इंक्वायरी. तो यू टेक फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑल्सो कि कोई ऐसा कोई आपको लग रहा है कि कोई फ्रॉड वगैरह कुछ हुआ था, तो वो भी आप एक MRL ले लेता है तो अपना क्लाइंट वगैरह से. समझे. तो याद रखिएगा ये सब चीज कि पहले बिजनेस का स्टडी करेगा, उसका बिजनेस के बारे में ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, पास्ट का ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, और फिर आप एपी करेगा. एपी सब लिखा है उसमें, आप पढ़ा नहीं, ये चीज एरिया आप लोग ने नहीं पढ़ा है, तो ये चीज है. ठीक है. ये फायदा है, मॉक इंटरव्यू कुछ ना कुछ छूट ही जाता है इंसान का करते करते भी. ठीक है. तो हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, ये एक इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया ना कहाँ कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं. क्लाइंट ऑब्जर्वेशन में गलती हो रहा है, हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट में गलती कर रहा है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट and these examples, Palak. So deferred tax
is usually created when there is difference between the book profit as per financial statement and the income, the taxable profit as per income tax. So if there any difference, then the entity shall create deferred tax asset and deferred tax liability as the case. So the reason for the difference could be a permanent in nature and temporary in nature. So if I could give an example, like according to section 43B as per income tax act, some deduction Permanent is difference leads to deferred tax asset. Does sorry, permanent sir. difference leads to deferred tax asset or liability? Deferred tax asset, sir, is a permanent. Permanent difference never leads to deferred tax asset or liability. It's the temporary differences which leads to deferred tax asset or liability. Okay. Okay. देखिए गलती हो गई Okay. ना. Deferred tax asset का एग्जांपल क्या होता है? सुनील कुमार याद है? Secondary expenses. Depreciation as per books of accounts and परमानेंट डिफरेंस होता है फाइन पेनल्टी डोनेशन. फाइन पेनल्टी डोनेशन ये लिख लीजिए, ये एक्सेल भी नहीं है भाई, डेफर्ड टैक्स एसेट है एक्चुअली, वो भी लिखवाए थे, वो भी है फाइन पेनल्टी डोनेशन. तो परमानेंट डिफरेंस के कारण कभी भी आपका डीटीए डीडीएल क्रिएट नहीं होता है. टेम्पररी डिफरेंसेस के कारण आपका डीटीए डीडीएल क्रिएट होता है, याद रखिएगा. और ये डीटीएल जो क्रिएट होता है, डेप्रिसिएशन से डीटीएल क्रिएट होता है, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस. और आपका डीटीए जो क्रिएट होता है वो आपका परमानेंट टेम्पररी डिफरेंस के कारण होता है. आपका सेक्शन 43 अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपका एग्जांपल है. तो ये ठीक है, ये गलती नहीं करना है इसमें. ठीक है, तो दीज आर द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग. ओके, व्हाट आर द ऑडिट रिपोर्ट अमेंडमेंट्स, प्रियंका चंद्र? Audit report. Give me 1 second, sir. Yes, sir. First amendment is if the company declare or paid any dividend, so is in the compliance with the section 123 of the Companies Act 2013 or not. And in the second, whether the company is using the software, such software that is used to I think to check the reporting audit trails. यस, ऑडिट ट्रेल, Sorry. राइट. ऑडिट ट्रेल करने के लिए कोई अकाउंट सॉफ्टवेयर है जो ऑडिट ट्रेल आपका कर रहा है. ठीक है, हाँ, to record the ओके. पलक गुप्ता, टैक्स ऑडिट में क्या अमेंडमेंट आया है? Sir, there is an addition in the clause 44. In this, we have to give the breakup of the expenditure related to the goods and services of exempt supplies. If there are any expenditure related to the person registered under composite supply and the person non-registered under CST. I'm audible, sir? यस यस, ऑडिबल. आप वीडियो ऑन करिएगा बस. हाँ. और सर वो ऑन है, वो नेट का इशू है शायद. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेस 115 एंड AS9, प्रियंका चंद्र? yes, sir. And DS 115 होता cover क्या है ना, the देखिए हम आपको all बता रहे हैं. type देखिए all होता type क्या है, of देखिए हाँ हम बता देते हैं होता क्या है. आप लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है और जाके बैठ गया कैंपस में, और कैंपस का दिन कुछ ना कुछ आपका मान के चलिए कैंपस से जस्ट पहले कुछ घटना हो गया, किसी के साथ भी कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही सकता है, कैंपस में कुछ ना कुछ हो जाए. पर आपने पहले से अगर मॉक इंटरव्यू अगर करके रखता है तो चलो हम लोग हैंडल कर लेगा ये सब चीज को. तो वो एक रहता है कि मैं तो किया वाला हूँ, ये किया कि मैं आई कैन हैंडल सच सिचुएशंस. मे बी जो इंटरव्यूअर है उस दिन उसका मूड ठीक नहीं हो, जो आपका ले रहा है, राइट. तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि उस सामने वाला जो ले रहा है आपका इंटरव्यू उसका मूड खराब हो उस दिन. पर आप अगर पहले से प्रैक्टिस करके रखा तो यू आर एबल टू डील विद दैट पर्सन. तो दैट इज द थिंग, समझे ना, ये चीज है. और मैंने देखा है ना, बहुत मुश्किल होता है जब आप पहले बार कोई भी इंटरव्यू देता है, 1 या 2 या 3 बार, तो मैं देखा बहुत टेंशन रहता है, हार्ट बीट एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, समझे ना. तो आप वो धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है. इसलिए बहुत जरूरी है मॉक इंटरव्यूज वगैरह. और नॉलेज भी आपका टेस्ट हो जाता है. आप कुछ छोटा छोटा गलती जो करता है लोग ध्यान देता है बिजनेस को लेके. ठीक है, ठीक है. क्या क्वेश्चन था अभी? डिफरेंस बिटवीन इंडेस 115 एंड AS9, बोलिए. Yes, sir. NDS 115 cover all type of performance obligation, and AS9 deal with revenue recognition of sale of goods and rendering of services, dividend and interest and royalty. And NDS 11
in NDS 115, revenue is recognized when control is transferred to the customer, and in the AS 9, revenue is recognized when risk and reward is transferred to the customer, and in AS 115, time value of money is considered, but there is no such concept in AS 9, time value Why of money. Indas And 116 was introduced? Why Indas 116 was introduced? आप लोग लिख लीजिएगा क्या कर रहा गलती कर रहा है, ठीक है? गलती भी नोट करते जाइएगा, ऐसा नहीं है गलती नहीं नोट की आप लोग ने, हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है? Why Indas 116 was introduced? डेफर्ड टैक्स एसेट में गलती हो रहा था, ठीक है, आपका क्लाइंट ऑब्जर्वेशंस वगैरह, ठीक है? Why Indas 116 was introduced? ऑडिट रिपोर्ट include अमेंडमेंट पता था ना आपको, पल्लव गुप्ता? Yes, sir. Yes, sir. Dividend and ऑडिट ट्रेल, ठीक है, audit क्या था? trail, yes. हाँ आप बोलिए, क्या था? Why Indas 116 was introduced? to include off balance sheet item on balance sheet item, and to provide the accounting treatment to lease modification, and for the better presentation. Three is the reason of NDS 116. Balance sheet to on balance sheet, what does it mean? Is like off balance sheet, that means um, that asset is the asset of the company, but it is not shown in the balance sheet, and although it is not Yeah, what was the not treatment the of part of lease the asset. earlier? What was the treatment of lease as per the old AS, and now what is the treatment of the lease as per the Ind AS 160 in the books of lessee? In the books of lessee, Yes. yes, there was a yes, in the previous NDS, we like lessee have a option to operating lease and the finance lease, to choose operating and the finance lease. But in the NDS 116, lessee has only one option, like to recognize finance lease in the books of account and create ROE asset in the balance sheet. What are the components of ROU asset? Like lease. Sorry, sir, I'm not able लीजिएगा to ये, recall that. I आपको will पता है read it. ROU asset का components? So present value of lease liability, initial direct cost, initial installation cost, plus present value of decommissioning, and less if there are any incentives. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप जब घर खरीदने जाता था आपका बहुत सारा डायरेक्ट कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह लगते रहता है, फिर डीकमीशनिंग कॉस्ट वगैरह कैसे करके याद हो जाता है। हम घर खरीदते हैं तो ब्रोकरेज लगता है, ये लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ ना कुछ लगते हैं। डीकमीशनिंग किया, फिर इसको उठा के इधर करना पड़ा, उसको चाय वाला का दुकान को इधर करना पड़ा, उसे करके याद करने की कोशिश करें, याद हो जाएगा आपको डीकमीशनिंग कॉस्ट वगैरह। इजी है, डिफिकल्ट नहीं। ओके, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी, प्रियंका चंद्र? In the books of lessee, IRR rate we will use if there is no IR rate. Sorry, sir, I haven't लिख read लीजिए this क्या क्या topic. क्वेश्चन है, आप लिखते जाइए, ठीक है। पल्लव गुप्ता। Okay. Sir, for lessers, IRR, and if the IRR is not present, then let's say incremental borrowing rate will be used. पल्लव गुप्ता पूरा सॉलिड है आपका प्रिपरेशन, खाली एक दो क्लाइंट ऑब्जर्वेशन वगैरह हो रहा था, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये चीज आपको पता चल गया ना प्रियंका चंद्र, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट? तो ये सब वो होता Yes. है, देखिए सबसे होता है, तो इज नथिंग टू गेट वरीड अपॉन, ठीक है। आई थिंक सो आप लोग का कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो एक बार के लिए सेम मीटिंग लिंक में फिर से आ जाइए, 10 मिनट और आपका लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। और भी 2-4 क्वेश्चन आप लोग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सुनील कुमार आपका अच्छा से हुआ ना, बहुत हद तक आया ना कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यू गेट द पॉइंट ना, दैट इज द थिंग। एक बार सेम मीटिंग लिंक में आ जाइए, 10 मिनट और लगेगा, ठीक है। और मैं 2-3 क्वेश्चन